हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजरायल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। זה לא סוף ארגז הכלים, זה צריך להיות מאוד ברור. יש עוד כלים קדימה ללכת, והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה, של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש, גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה בזמן הנכון, בצורה מאוד חדה, ואנחנו עכשיו עוברים להכין בצורה מאוד חדה גם את הדברים הבאים. בסופו של דבר, אני מדגיש עוד פעם, מוכנות C בכל הגזרות שלנו, כל הכוחות, כולל חבירה לארגונים האחרים, צריך להיות תיאום מאוד טוב, מוכנות מאוד טובה. इन दिनों इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्यालय में किए गए हवाई हमले में नसरल्लाह की मौत हुई। इजरायली मीडिया का दावा है कि इसी हमले में नसरल्लाह की बेटी की भी मौत हुई है। ये इतना भीषण हमला था कि आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहीं मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। इजराइल ने भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया था। इजराइल ने भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। अटैक के बाद इजरायली पीएम ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर साझा की जिसमें वे लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमले का आदेश दे रहे हैं। ये तस्वीर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी की गई। शनिवार रात से इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, रुक रुक कर हो रहे हमलों के चलते राजधानी बेरूत में भारी नुकसान पहुंचा है और आम लेबनानी लोगों में भारी दहशत है। बेरूत की 40% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। आलम यह है कि डर के मारे लोग बिल्डिंग खाली करके समुद्र किनारे भाग रहे हैं, जहां कई लोग कारों, पार्कों में और समुद्र किनारे खुले में सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। फुटपाथ पर गद्दे बिछाकर रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि हालात सामान्य होने तक घर नहीं जा सकते। पिछले सप्ताह लेबनान के कई शहरों में पेजर और वॉकी टॉकी हमलों के बाद से ही स्कूल और कॉलेज बंद है। सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें, खाने पीने के स्टोर और पेट्रोल पंप ही खुले हैं। Hassan Nasrallah, the leader of the terrorist army Hezbollah, was killed by Israel Defense Forces in a precise strike in Beirut last night while he was in Hezbollah's central headquarters commanding more imminent attacks against the people of Israel. For decades, Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah, orchestrated countless attacks against innocent people. Hassan Nasrallah had the blood of thousands of men, women, children on his hands. Israeli, Jews across the world, Lebanese, Americans, British, French, Syrians, and other countless victims across the Middle East and beyond. Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah, joined Hamas in attacking Israel on October 8th. Just one day after Hamas's massacre on October 7th, for almost a year, Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah, has been firing thousands of rockets, suicide drones, anti-tank missiles, and ballistic missiles at Israeli towns and cities. 60,000 Israelis fled their homes in northern Israel. Hezbollah has openly declared that it has a plan to carry out its own October 7th massacre on Israel's northern border, but even in a larger scale. They call this plan Conquer the Galilee. Hezbollah has been planning to do this in northern Israel,
what Hamas did in southern Israel on October 7th, invade Israel, infiltrate civilian communities, and massacre innocent civilians. The Israel Defense Forces will not let it happen. Hassan Nasrallah, the leader of an evil terrorist organization, the senior terrorists eliminated with him, and the central headquarters were a legitimate military target under international law. Nasrallah intentionally built Hezbollah's central headquarters under residential buildings in Dahia, Beirut, because Hezbollah intentionally uses Lebanese civilians as human shields. While Hezbollah seeks to maximize civilian harm, Israel seeks to minimize it. Our war is not with the Lebanese people. Our war is with Hezbollah. Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah, chose to join the war that Hamas started. There are consequences for that decision. Hezbollah is not just a threat to Israel. Hezbollah is not just a threat to the state of Lebanon. Hezbollah is a threat to the world backed by the regime in Iran. As of last night, Hezbollah's leader Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world. For Nasrallah's many victims over the decades, whether in Israel, Argentina, Bulgaria, Syria, or Lebanon itself, justice has been served. We warned the world countless times. Hezbollah is dragging the state of Lebanon and the entire region into a wider escalation. Israel does not seek a wider escalation. We seek two things, two simple things: to bring our hostages home for almost a year in Hamas captivity in all means, and to make sure that our borders are safe and secure for our citizens.